Folk dance connects us to the soil, to the rhythms of everyday life, community bonds, and shared celebration. Our next presentation is Ahiri, a spirited folk dance rooted in the traditions of Ahir community of North India. Ahiri beautifully captures themes of love, valor, and pastoral life. Through colorful costumes, expressive movements, and infectious energy, the performance celebrates heritage, unity, and the joyful spirit of rural India. Please join me in welcoming the Folk Dance Society of Hansraj College, Abhivyakti. Presenting this beautiful tradition today is a solo performance by Rajat Rai. Please put your hands together for Rajat. आप सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। हंसराज कॉलेज 78वां एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम की हमारे चीफ गेस्ट
क्योंकि 78वां बहुत महत्वपूर्ण अंक होता है। 8 और 7 को मिलाओ तो सब 15 बन जाता है। कभी चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण कैसे होता है। आज तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज इस कार्यक्रम के हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर प्रतीक शर्मा वाइस चांसलर DTU हमारे बीच में हैं। सर, हंसराज कॉलेज में आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और करतल ध्वनि से आप सब लोग उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के विशेष अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर, बहुत सौभाग्यशाली होती है कोई संस्था जब उसके विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते जब विद्यार्थी देश की सेवा के लिए समर्पित हो जाते हैं, तो मुझे लगता है किसी भी कॉलेज के लिए इससे अधिक गौरव कुछ नहीं हो सकता। और आज हमारे बीच गेस्ट ऑफ ऑनर श्री मणिशंकर झा, जो कि सेकंड कमांडेंट ऑफिसर इन BSc, हंसराज कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर विजय रानी राजपाल, IQAC डायरेक्टर मैडम, कॉलेज के बर्सर प्रोफेसर मनजीत सिंह, कॉलेज के PIO डॉक्टर लोकेश, स्टाफ काउंसिल सेक्रेटरी डॉक्टर ईश्वर सिंह, NCC कन्वीनर बॉयज डॉक्टर अरविंद, NCC कन्वीनर गर्ल्स डॉक्टर ज्योति सिंह, NSS कन्वीनर डॉक्टर अपूर्वा, NEC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनिता अग्रवाल, स्टूडेंट एडवाइजर हंसराज कॉलेज डॉक्टर विनोद कुमार माइला, कॉलेज लाइब्रेरियन नरेंद्र सिंह रावत, एकेडमिक अफेयर्स कमेटी दिशा डॉक्टर P. धर्मारा, हंसराज कॉलेज एलुमनी एसोसिएशन प्रेसिडेंट मिस्टर राजकुमार रावत और उनके साथ उनकी पूरी टीम, हंसराज कॉलेज के जिन्हें आप रिटायर्ड कहते हैं, मैं बहुत अनुभवी टीचर्स कहती हूँ, वे सभी अनुभवी टीचर्स, हंसराज कॉलेज का टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट्स, आज का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन आपको बहुत बहुत इसकी बधाई, आप सबका वंदन है, आप सबका अभिनंदन है, क्योंकि इस 78वें प्रोग्राम की जो सेलिब्रेशन की कन्वीनर डॉक्टर शैलू सिंह, आपको और आपकी पूरी टीम को विशेष बधाई, क्योंकि ये कार्यक्रम तब होने जा रहा है जब हंसराज कॉलेज ने पूरे देश की निफ्ट की रैंकिंग में 3रा स्थान प्राप्त किया। आप सबको उसके लिए बधाई। जो 3रा स्थान आया, हालांकि 3रा स्थान देश भर में चर्चा का विषय बनना भी चाहिए, क्योंकि अभी तो हमारी यात्रा 3रे तक रुकनी नहीं, आगे बढ़नी है। लेकिन इस 3रे स्थान पर आने के लिए मैं RDC कन्वीनर डॉक्टर विजय रानी और RDC में उनके साथ कर रहे डॉक्टर विजय शाठी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि हंसराज कॉलेज ने प्रोफेसर प्रतीक रिसर्च में कई माइलस्टोन क्रिएट किए हैं, और देश भर की जब निफ्ट की रैंकिंग आई तो हंसराज कॉलेज रिसर्च में टॉप पर रहा। टॉप पर आने का कारण ये रहा कि हंसराज कॉलेज में जो हमारी एक्सटर्नल एजेंसीज हैं, चाहे आपकी DSP हो, आपकी NRF हो, इनमास, SCRB, DPT, IKS, तमाम एक्सटर्नल एजेंसी से हंसराज कॉलेज को लगभग 85 लाख की ग्रांट मिली। 85 लाख की ग्रांट अपने आप में मायने रखती है, और RDC ने रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए हमारे लगभग 33 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो 56 रिसर्च स्कॉलर्स को सुपरवाइज कर रहे हैं, उनके सुपरवाइजर हैं, यानी भविष्य के लिए एक पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जो सुपरवाइजर्स हैं, आज जितने हमारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, इन पेरेंट्स को हम प्राउड फील करते हैं, क्योंकि इन्हीं में से कुछ विद्यार्थी आगे रिसर्च में जाएंगे, हंसराज कॉलेज से बाहर जाएंगे, और पेरेंट्स ने उनको जो संस्कार दिए हैं और हंसराज कॉलेज ने जो उनको अनुशासन दिया है, जो हवा दी है, मुझे लगता है ये सब मिलकर देश में नवाचार करेंगे, देश में शोध करेंगे। इतना नहीं, हंसराज कॉलेज ने अपने एक्सटर्नल ग्रांट के साथ साथ इन हाउस प्रोजेक्ट भी शुरू किए, जिसमें कॉलेज ने अपने फैकल्टी प्रोजेक्ट्स जो आपके 24-25 में थे, 19 प्रोजेक्ट्स के लिए मान्यवर लगभग 13 लाख का 13 लाख का अमाउंट दिया, और 25-26 में जो भी चल रहा है उसमें अराउंड 10 लाख के प्रोजेक्ट दिए।
इसके साथ महात्मा हंसराज फेलो इंटर्न प्रोजेक्ट शुरू हुए, जिसमें अराउंड 1.5 लाख ग्रांट दी गई और रिसर्च अवार्ड दिए गए। 26 फैकल्टी मेंबर्स हंसराज कॉलेज के 26 फैकल्टी मेंबर्स ने लगभग 5 लाख की ग्रांट जो है वो अवार्ड के लिए प्राप्त की। इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही नहीं, हंसराज कॉलेज में, क्योंकि हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, हंसराज कॉलेज IKS इनोवेशन, जिसको कि प्रोफेसर शर्मा भानु, डॉक्टर दीपक शेट्टी, डॉक्टर प्रीति रानी कर रही है। हमारी सेंटर फॉर जो हमारा सेरिकल्चर है, सेरिकल्चर जूलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर धीरज एक अच्छा सेंटर चला रही हैं और मुझे लगता है कि उस सेंटर में हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग मिल रही है। और सर, उससे अब केवल हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट्स ही नहीं जुड़े हुए, बल्कि दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके भी स्टूडेंट्स आकर डॉक्टर धीरज के सेंटर में ट्रेनिंग पा रहे हैं। इसी तरह से जो ई-सेल और इंक्यूबेशन सेंटर जो कि प्रोग्राम का संचालन कर रही है, प्रोग्राम को कंडक्ट कर रही है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की माधुरी मोहनी, वो इसको बहुत अच्छे से रन कर रही है। हमारा जो स्टूडेंट लर्निंग सेंटर है, डॉक्टर पूजा अरोड़ा, हंसराज कॉलेज की जो हंस शोध पत्रिका आती है, डॉक्टर नम्रता सोनी, डॉक्टर पूजा अरोड़ा, डॉक्टर अनुराग कक्कड़, पूरी टीम को बहुत बधाई कि इस तरह का वो एक रिसर्च जर्नल निकाल रहे हैं। डॉक्टर सविता की कन्वीनरशिप में हंसराज कॉलेज का जो मशरूम कल्टीवेशन सेंटर है वो कई तरह के अच्छे काम कर रहा है। ठीक इसी तरह से प्रेजेंट में सेंटर फॉर वैदिक एंड योगिक साइंस, जिसे डॉक्टर जानेश्वरी गेलमकी, डॉक्टर शिवम शर्मा और डॉक्टर गौरव कुमार चला रहे हैं। FDP सेंटर जिसने कि कई माइलस्टोन क्रिएट किए, वो माइलस्टोन क्रिएट करने वाला सेंटर डॉक्टर आशुतोष और उनकी पूरी टीम के साथ काम करते हुए लगभग 1 लाख टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा चुका है। उस FDP सेंटर को भी बहुत बहुत बधाई। आज हमने जिस पत्रिका का, जिस वार्षिक रिपोर्ट का हमने यहाँ पर जिसको इनॉग्रेट किया, पब्लिकेशन डिवीजन डॉक्टर विजय मिश्र, और जो हमारा फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से हंसराज कॉलेज को आगे लेकर जा रहा है, उसके लिए फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर रचना शर्मा, उनके सीनियर टीचर डॉक्टर MP शर्मा और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। ये तो बनते हुए चावल में से चावल का एक दाना निकालकर हंसराज कॉलेज की उपलब्धियों का थोड़ा सा ब्यौरा आपके सामने रखा है। यात्रा करते हुए हंसराज कॉलेज में हम सब शामिल हैं। मेरा मानना है जो हंसराज कॉलेज तीसरे स्थान पर आया है, माननीय, दरअसल हमारे लिए तीसरा नंबर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है यहाँ के टीचिंग, नॉन टीचिंग और स्टूडेंट्स की मेहनत, और जितना मूल्यवान नंबर गए उसके साथ है इन पेरेंट्स का हमारे ऊपर विश्वास। और आज के इस कार्यक्रम में, इस मंच से मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हम हंसराज कॉलेज के संस्कारों के माध्यम से, अनुशासन के माध्यम से आपकी आंखों के तारों को अनुशासन में रखते हुए आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रतीक शर्मा जी, आज का यह दिन हमारे लिए केवल एक औपचारिक तिथि नहीं है, केवल एनुअल फंक्शन ही नहीं है, बल्कि यह आत्ममंथन, उपलब्धि और संकल्प तीनों का संगम है। क्योंकि 78 वर्षों की इस गौरवपूर्ण यात्रा में हंसराज कॉलेज ने न केवल शैक्षणिक उपलब्धियां अर्जित की, बल्कि चरित्र, चेतना और लीडरशिप की एक सशक्त परंपरा का निर्माण भी किया। दिल्ली विश्वविद्यालय की समृद्ध शैक्षणिक विरासत का हिस्सा होते हुए हमने सदैव उत्कृष्टता को अपना लक्ष्य बनाया, परंतु केवल अंक और उपलब्धियां ही नहीं, बल्कि मूल्य, अनुशासन और व्यक्तित्व निर्माण हमेशा हमारे केंद्र में रहे। आज हम अपने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे, तो यह स्मरण रखना आवश्यक है कि हर पदक के पीछे त्याग है, हर प्रमाण पत्र के पीछे संघर्ष है और हर उपलब्धि के पीछे अनगिनत प्रयासों की कहानी है। क्यों? क्योंकि यह मंच केवल विजेताओं का नहीं, बल्कि उन सभी का है जिन्होंने निरंतर प्रयास किया, स्वयं को परखा और हर असफलता के बाद, हर चुनौती के बाद फिर से पुनः दृढ़ विश्वास के साथ खड़े हो गए। मैं विशेष रूप से
हमारे विशिष्ट अतिथि श्री मणिशंकर झा का भी अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि एक पूर्व छात्र का अपने संस्थान में विशिष्ट अतिथि के रूप में लौटना और वह भी देश की सेवा करते हुए लौटना, मुझे लगता है हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा पात्र है, जिससे प्रमाण मिलता है कि यह संस्थान अपने विद्यार्थियों को केवल शिक्षित ही नहीं करता, बल्कि जीवन के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए तैयार करता है। आज उनका यहाँ होना हमारे विद्यार्थियों के लिए संदेश है। आधुनिक भारत के विद्यार्थियों के लिए, अनेक चुनौतियों से घिरे हुए विद्यार्थियों के लिए और हर समय मन में क्रांति की भावना रखने वाले विद्यार्थियों के लिए, पल भर में जोश में आकर संस्थान के लिए कुछ भी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मणिशंकर जी के माध्यम से यह संदेश है कि परिश्रम, अनुशासन और मूल्य, इन तीनों का समन्वय व्यक्ति को ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रतीक शर्मा जी का मार्गदर्शन हमें नवाचार, शोध और प्रौद्योगिकी के युग में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में संस्थानों को केवल ज्ञान का केंद्र नहीं, बल्कि विचारों की प्रयोगशाला बनना होगा, जहां प्रश्न पूछे जाएं, विमर्श हो और समाधान खोजे जाएं। जब मैं विचारों की प्रयोगशाला की बात करती हूँ, मैं हंसराज कॉलेज के टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, हर किसी को एक संदेश देना चाहती हूँ कि आपको अगर हंसराज कॉलेज में रहना है तो आपको पॉजिटिव होना होगा। आपके अपने संघर्ष होंगे, आपके अपने मन के द्वंद्व होंगे, आपके अपने मन के कष्ट होंगे, लेकिन हम सब हंसराज परिवार के सदस्य हैं और हम सबका कर्तव्य है कि हम हंसराज कॉलेज की हवा को सकारात्मक बनाएंगे। हम किसी भी सूरत में, किसी भी माध्यम से, अपने किसी भी कार्य से इस कॉलेज की हवा को खराब नहीं होने देंगे, और किसी ने अगर खराब करने की कोशिश की तो फिर हम सहनशील भी नहीं बनेंगे। ये हम सब के लिए एक कड़ा संदेश है वर्तमान परिदृश्य। प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि सबसे ज्यादा अपेक्षाएं संस्थान को बनाने वाले, संस्थान को आगे ले जाने वाले प्रिय विद्यार्थियों आप ही होते हो, और आप एक ऐसे समय से जीवन की दिशा चुन रहे हो जब अवसर भी व्यापक हैं और चुनौतियां भी विशाल। प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में आगे बढ़ना आवश्यक है, किंतु टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आगे बढ़ना आवश्यक है, परंतु उससे भी अधिक आवश्यक है अपने भीतर के मानवीय मूल्यों को सुरक्षित करना, अपना स्वाभिमान कायम रखना और दूसरे का भी सम्मान स्थापित करके रखना। यह बहुत अधिक जीवन में आवश्यक होता है। याद रखिए, सफलता वह नहीं जो केवल आपको ऊंचा उठाए, सफलता वह है जो आपके साथ समाज को भी ऊपर उठाए। और टीचर्स का दायित्व होता है कि हमने आने वाले युग का निर्माण करना है, इसलिए हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा हर एक्शन ऐसा होना चाहिए जो हमारे भविष्य की पीढ़ी को प्रेरित करे। आज का यह सम्मान प्रिय विद्यार्थियों आपके जीवन का एक पड़ाव हो सकता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं। आपकी वास्तविक परीक्षा तब होगी जब आप अपने ज्ञान को समाज के हित में प्रयोग करेंगे, जब आप निर्णय लेते समय, जीवन में कोई भी निर्णय आप लेंगे तो आप नैतिकता को प्राथमिकता देंगे, जब आप अपने व्यक्तिगत लाभ से उठकर संस्था, समाज और राष्ट्र के व्यापक हित को देखेंगे। आइए हम सब मिलकर आज इस पावन अवसर पर यह सामूहिक संकल्प लें कि हम ज्ञान को केवल अर्जित नहीं करेंगे, बल्कि उसे समाज के कल्याण में सार्थक भी बनाएंगे। इस सफलता को प्राप्त करने तक हम केवल अपने आप को सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उसे साझा कर उसे व्यापक कर देंगे। हम जीवन की ऊंचाइयों तक केवल पहुंचने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि अपने मूल्यों, अवसरों, संस्कारों और चरित्र की ज्योति को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। जहां भी जाएंगे सत्य, परिश्रम और नैतिकता को अपना पथ प्रदर्शक बनाएंगे, क्योंकि आप केवल विद्यार्थी नहीं हैं, आप हंसराज कॉलेज की गौरवशाली परंपरा के संवाहक हैं।
और आप केवल आज के युवा नहीं बल्कि आने वाले भारत के निर्माता हैं। तो आइए आत्मविश्वास, आस्था और उत्कृष्टता के अटूट संकल्प के साथ भविष्य की ओर बढ़े, ऐसा भविष्य करें जिस पर यह संस्थान और हमारा राष्ट्र दोनों गर्व कर सके। प्रोफेसर प्रतीक शर्मा, आज विद्यार्थी आपसे सम्मानित होंगे। आपके लिए और आपसे सीख लेते हुए बच्चों के लिए मैं इतना कहना चाहूंगी, एक टहनी एक दिन पटवार बनती है, चिंगारी सदा दहकर अंगार बनती है। जो सदा रोंदी गई मिट्टी समझकर मिट्टी वही एक दिन मीनार बनती है। आप देश के लिए यदि जागते हैं, तो हमारा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों राष्ट्र का निर्माण करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन रात इनकी भी धड़कन जारी रहती है, क्योंकि इनको लगता है इनको संभालना हमारी जिम्मेदारी है। अपनी बात को विराम देते हुए कुछ कविता की पंक्तियां सामने रखूंगी, क्योंकि आज्ञा जी ने लिखा, मैं कब कहता हूं जब मेरी बुद्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूं जीवन मरु नंद कानन का फूल बने। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूं मैं घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। कविता बहुत लंबी है, लेकिन कविता का संदेश बहुत गहरा है, टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों के लिए, जिन्होंने राष्ट्र का निर्माण करना है। पूरी कविता ना पढ़कर कविता की अंतिम पंक्तियों पर आती हूं। मैंने विदग्ध हो जान लिया, यहाँ रहते हुए अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं नर्क की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सी आंधी का और ज्यादा उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता की ऐसी धार बने। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। आइए हम सब अपने कुछ स्वार्थी पलों को छोड़कर, अपने भीतर के स्वार्थ को छोड़कर, हम सब एक संकल्प लेकर, एक उद्देश्य लेकर, एक विचार लेकर कदम से कदम मिलाते हुए समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। It is now my privilege to formally introduce our guest of honor, Shri Hansraj. He hails from Hansraj district in the state of Jharkhand. He attended Hansraj College from 1994 to 1997. He was commissioned as an assistant commandant in the BSF in 1999. During his service, he performed duties with utmost dedication and courage in the terrorism-affected areas of Jammu Kashmir, Odisha, Punjab, Bengal, and other sensitive areas. For his outstanding work ethic and leadership abilities, he received the Director General's Commendation Certificate, Letter of Appreciation, and many other accolades. For our students here, his presence today stands as a powerful reminder that the values nurtured within these college walls can shape leaders who serve the nation with distinction. Sir, we are immensely proud of you and honored to have you back. May I request you to please address the gathering? Respected Professor Pratik Sharma, Vice Chancellor, Delhi Technical University, Professor Rama, Principal, Hansraj College, Dr. Salu, distinguished faculty members, honored guests, and my dear young friends. Today, I feel privileged to stand before the bright young minds of one of the finest institutions of our country. Being here today takes me down memory lane, reminding me of my college days when I sat where you are sitting right now. It is such a great pleasure to be here again among you. I do not just see an audience here, I see future administrators, scientists, interpreters, artists, soldiers, and leaders of India. Friends, we are one of the youngest nations in the world. This is not merely a democratic fact, it's a responsibility.
I strongly believe that energy, innovation, courage that lie within this room can change the destiny of this great nation. Many people believe that serving the nation means only joining armed forces or civil service. Of course, that is one of the paths. But nation building happens everywhere. I would quote a few examples. Like an honest engineer builds safe infrastructure, a dedicated teacher saves responsible citizens, an entrepreneur creates employment, a responsible voter strengthens democracy. Patriotism is not about only slogans, it's about integrity in daily actions. It's not only about waving the flag, it's about living with honesty, discipline, and responsibility. Today, in these premises, I feel confident about the future of our nation because the future is sitting right in front of me. In uniform services, discipline is not a choice, it's a way of life. Let me share something important with you. When you control your time, your habits, your focus, it means you control your destiny. Often the only difference between an average individual and an exceptional one is discipline and only discipline. At your stage in life, you are going to face different kinds of challenges. Exams, career uncertainty, competition, failures. Do not fear them. Challenges are not roadblocks. They are stepping stones. They prepare you for the bigger responsibilities. Some of you may wear a uniform like me. That is perfectly fine. But I would like to say that nation building happens everywhere. When you work honestly, when you respect diversity, when you reject shortcuts, and most importantly, when you use social media responsibly. I would urge you all not to wait for a designation to become a leader. Leadership begins with taking responsibility, standing up for what is right, helping someone without expecting recognition, and admitting mistakes. A true leader inspires by example, not by authority. My young friends, dream big, but remember, the dreams require discipline, success requires sacrifices, freedom requires responsibility. Whether you become a soldier, a scientist, or a startup founder, remain rooted in values like Rama ma'am had pointed earlier. Since I belong to the Indian Home Services, I cannot resist myself from talking about fitness. I strongly encourage you to invest time daily in physical activity. A healthy body supports a resilient mind. Equally important is mental strength, the ability to stay calm under pressure, to think clearly, and to act responsibly. Today I would like to speak about something that is overlooked, happiness. Khush rehna. Success and achievements are important, but without happiness, success feels empty. The happiness does not come only from marks, medals, or positions. It comes from inner peace, meaningful relationship, gratitude, and a sense of purpose. Be ambitious, but do not forget to be happy. Work hard, but also take care of your mental well-being. When you are happy and balanced, you make better decisions and contribute more effectively to society and the nation. My dear friends, your future is not decided by your background, but by your discipline, character, and commitment to the nation. Work hard, stay honest, stay disciplined. And wherever life takes you, always remember, the nation comes first. I extend my sincere gratitude for inviting me on this 78th annual prize distribution day.
Thank you, and I wish you all a very bright and prosperous career. God bless you. We are deeply honored to have with us our esteemed chief guest, Professor Prateek Sharma, as Vice Chancellor of Delhi Technological University. He leads one of India's foremost institutions of engineering and technological excellence. His academic vision, administrative acumen, and forward-looking leadership have strengthened innovation, research, culture, and industry engagement at the university. His general research interest focuses on environmental systems modeling, statistical applications in environmental and water resources, and environmental risk assessment. Sir, your commitment to nurturing future-ready graduates aligns deeply with our institutional ethos at Hansraj College. It is particularly meaningful that both DTU and Hansraj are partner institutions in the prestigious Dell Aspire Scholarship Program, and this shared association reflects common commitment not merely to academic excellence, but to inclusive excellence. So, good morning all of you. Professor Rama, guest of honor, Ms. Jha, Dr. Sailu Singh, and my colleagues, I would say, from the teaching fraternity, dear students and their parents. It's such a pleasure and privilege to be here, and I would just like to thank Professor Rama and especially Dr. Sailu for actually giving me this opportunity to address the gathering. It's a wonderful experience, let me tell you. Coming back to Hansraj College is really wonderful. Because informally also I was sharing with Professor Rama and other colleagues. It takes me back to not even 85 when I joined college, Delhi College of Engineering, but prior to that, when I was I entered 9th standard, and we were struggling with equations, chemistry equations, and we got hold of a book written by Professor P.L. Soni, The Language of Chemistry. So that was my first exposure to Hansraj College, and in fact, we had been, trained to read the NCERT book. That was the first book that I read, which was different from the NCERT book, and actually it laid foundations in chemistry, especially the language of chemistry, which are the equations. And in fact, that was the first thing. And later on, obviously, the books written by Professor P.L. Soni in chemistry are all well known. And later, in fact, 85 when I entered, we had a lot of friends in the botany department, and one friend in the economics department of the great Shah Rukh Khan, who actually is the epitome of hope and inspiration for so many millions in this country. And obviously a proud alumnus of Hansraj College. And then, I used to hear a lot of stories about the great teachers, especially in the botany department, because my friendship was more there. Professor Yash Oberoi and Professor Sajwan or Sagwan, I don't recall. Sajwan. Okay, he's there. Wonderful, sir. I heard so much about you, sir. I heard so much about you. And in fact, I was studying in Kashmiri Cave, but quite often whenever I used to find time, I used to come here and visit the rich. I was seeing your the class notes of your class, very nicely written by my friend, who went on to do his MSc from Pantnagar and did PhD from IIT Delhi. This is how the connection with Hansraj is. So when Dr. Sailu called me, so I thought this is a wonderful opportunity to come and share these experiences, which are actually, I couldn't share with anybody for that matter. It's wonderful to be here. Later on, when I went to college, so obviously there were books written by Professor Shanti Narayan. Any institution is actually recognized by the quality of the teachers. And I think the quality of teachers, as far as Hansraj is concerned, there is no doubt about, in terms of scholarships, in terms of teaching standards, benchmarks, whatever I have heard firsthand from my friends. And otherwise also, I've been a recipient of some wonderful books written by the faculty members of Hansraj College. Two names I've already taken. Then later on, even though we were studying engineering physics, engineering mathematics,
but in order to have something about it, calculus, we always refer to Shantinarayan's books. So those were the good days, good old days. And visiting the Hansraj College, obviously, and I played cricket match also here. I represented under 19 in my college, school, I'm sorry. So, I mean, obviously for cricket, it used to be Hindu College or Khalsa, but we had this opportunity to, play some matches at Hansraj College also. There was one of the alumnus from Hansraj College who used to play in my club, which is a DDCA club, a Division A club. Some Jain, I remember, left arm spinner who, in fact, I played cricket here in Hansraj College also. So, I'm not recalling his first name. So, as you know, the distinction, any institution is basically recognized by the academic discipline and the quality of teaching that the institution provides. There are so many other institutions also quite ostentatious in their, self-proclamation. But Hansraj College, I believe, has been always subtle, understated. Excellence, if we have to define, is basically it was understated excellence is what all around in all the subjects that I would say. But I have been more familiar to the mathematics, economics, and botany specifically, and chemistry because of the books that I've read. And in fact, all throughout these years, if we talk about rounded personality, in fact, you'll find some college doing good in economics, some college doing good in physics or in mathematics. There are colleges that they are identified by certain programs or courses. I mean, whatever, time that I've spent in academics, Hansraj comes across as an institution which is all round across all the disciplines. So that is the wonderful feature, I would say, of trait of Hansraj College. And obviously, since we've been also with GTU, we've been associated with Dell Foundation as the MC spoke, and we've lot of association. And Professor Rama mentioned about the R&D component, the faculty which are contributing towards the R&D. Typically, this is something unique, I would say, because R&D activities usually in the undergraduate colleges are unheard of. And especially because I also had the privilege of coming here to see the incubation cell, which again is a unique USP of Hansraj College, because typically if we see, the focus remains on the undergraduate teaching, and at times because predominantly it's a college, so therefore everybody focuses on teaching the students, the teachers, and the expectations of doing research is not there, so to say. But anybody worth his or her salt who is in academics, if we have to move forward to basically address our thirst to know more, can only be achieved then when there is an element of research that we undertake. Whether we undertake in the college only or we associate ourselves with some department. And that basically helps us in being familiar with the new knowledge that gets created, and we disseminate that through our lectures. And this is how an ordinary teacher becomes extraordinary, because an extraordinary or exceptional teacher is the one who keeps on updating his or her knowledge. And that can only happen if we undertake research or we are part of some startup or incubation ideas. So these are the things that distinguish an ordinary teacher from an extraordinary teacher. And what Professor Rama told in her report was something similar, and which is something I think the culture of research is very limited in the undergraduate colleges especially. And I believe that is the reason, because of the good ranking that the institution has also got. And plus at the same time, she mentioned something about geology, and as civil engineer I know this geology as a subject we study,
And when we used to talk and think about geology, so always the Hansraj college used to come, because it's the only, I think, college which is offering geology honors at least. Other colleges also, but when I was studying, I think geology was the only, geology was the only, Hansraj was the only college which was offering geology honors. So this is something really special which is unique with the college. And as we see, and the NIRF, even though these things are not important, but these days these things have become important because everything gets quantified. Good old days, people used to come, teach, enjoy with a blackboard and chalk, but these good old days somehow have been overtaken by technology. But then, the best, teachers are the ones who actually stand in the class with a chalk and board. And because they are able to connect with you. Whatever you may say, the AI is coming, the technology is coming, AI will take over. But you can't replace a good teacher, the inspiration, the hope that the good teacher gives. So whether it's basically whether you are in college or university or even school, we still remember with a lot of reverence all our teachers who, even though they were strict, and in certain cases they failed us also, but the sincerity and the honesty of those teachers we always remember. I'll share one example with you. There was one course in our civil engineering, structural engineering. So we have a truss design that we do. And it's a whole 20 marks question, and so almost it takes around 5-6 pages to complete the solution. And I still remember that my teacher of mine, so I did everything right. So instead of sin 30, I did cos 30. Everything was right, and I went to the last page, so he gave me 2 out of 20. So I said, sir, this is everything, all my steps are right, I have not done anything wrong, and you have given me 2 out of 20. So then he said, son, this is the truss which you are going to construct and design, on which people are going to drive, and their hope in the engineer is more than the God. And if nobody is going to ask you, why did you do sin 30 and instead of cos 30? So I am being very magnanimous in giving you 2 marks out of 20. I should have given you 0 and a slap. So that still remains with me. So that is how teachers shape. And I think whatever little bit knowledge I have from my friends and other ways also, there is an abundance of such teachers in Hansraj College, I must say. And one more thing I would like to mention is this, that we are actually living in very interesting times. The national education policy opens up a lot of opportunities. There are people who critically say about the NEP also, but there are very positive, because people have not actually fully utilized the potential of NEP 2020. And the most important, the USP of NEP 2020 is the decompartmentalization of knowledge. And people still think that, okay, you do tick mark with your AEC and your skill-based courses that you've done the job. But it is all about, analyzing a problem, not from the disciplinary boundaries, but from because the disciplinary boundaries only give you a part of the perspective of the problem. So that is the limited lens with which you see the problem. But actually, if you address the problem from all aspects, then only you get the solution. And there's a lot of mathematics in biology and a lot of biology in mathematics, people don't realize. And this deconditioning has to be done. That somehow in the Indian context, and especially I would like to mention to, especially the students, the times are changing. In our times, it used to be like this: if you are good in mathematics, you have to be bad in biology, and vice versa. But a lot of biology can be understood by statistics, probability, and mathematics. The entire discipline of computational biology is emerging like this only. So this is one of the examples, in fact, and this is one of my favorite examples, which I always quote, is that of
Professor Manjul Bhargav, who is one of the authors of NEP 2020, he received Fields Medal Award, which is considered the Nobel equivalent of mathematics, and he got in number theory. And he actually, and now he's the youngest professor of mathematics in Princeton. At the age of 28, I think he became the professor there. And he has contributed a lot in the NEP 2020. And you would be amazed and surprised that he owes his skills in number theory and mathematics to Sanskrit language and Indian classical music. And the patterns that you see in the leaves and at the back of the pineapple, I mean, all these are patterns which follow something related to the number theory. And that is what he proved and showed. And I think, if I'm correct, this is what resulted in, the Fields Medal Award. So therefore, the institutional, if we have to fully achieve the objectives of NEP 2020, there has to be some inter-institutional collaborations where there are certain excellence centers of excellence, islands of excellence, which are located in different institutions. So we need to talk to each other in a much larger manner, much wider manner, so that the real exchange of knowledge takes place. And this is what I would say is the USP of NEP 2020. And thanks to Dell Foundation, we have come together, Hansraj and ETU, the wonderful, first of all, the music concert that was done at the IHC, Stein Auditorium, was done together by ETU students and Hansraj. That was really wonderful. And this is one of the examples, but it should not just be limited to just having a concert or small performance in Indian classical music, but there are much more ways and means by which this collaboration needs to be extended, not just between Hansraj and ETU. I mean, within the colleges here also, I mean, there should be more collaboration. I mean, we tend to stay in silos, and because of which, we are not able to learn more about, each other, and even about the discipline also. Because we have been conditioned to think only in terms of disciplinary boundaries, and as a result of which, we always provide half-baked solutions to various problems. Taking an example of water, for example, as a civil engineer, I know I would look towards a water problem in terms of how to get a quality water and quantity water. But in addition to that, there are a lot of issues associated with the legal aspects, the sociological aspects, the financial aspects, the economic aspects associated with water. So unless and until we provide that understanding and knowledge to the kid, our knowledge and understanding would be limited only. And that is what I would say. And again, I'll end on this note only. We as a country are at the crossroads. This is something, we are going to become the third largest economy, and the manner in which we are going to develop, we have two options. We are actually at crossroads. Whether we follow the same developmental model which the West has followed, and which has resulted in problems like climate change, global warming, and in their enthusiasm, whatever developmental activities have taken place, these have really impacted the entire existence of mankind. So as a country, so we have to carve out our own trajectory, whether we follow the same path or carve out our own trajectory in an innovative manner without compromising our developmental goals. If we collaborate and undertake research which is interdisciplinary and track our trajectory which is more sustainable. And this can only happen when the dialogue between the institution and individual takes place. Thank you so very much, and I wish you all the very best. A very good afternoon to all of you. So we are now here to felicitate our students who have been university toppers, college toppers, and who have contributed a lot to the culture, art, music, dance, sports of the college, university, nation, as well as at international level. So to start with the university toppers, first we have Adrita Mukherjee, BSc Honours Geology, 3rd year. She is the university topper. Next we have Samriddhi Singh, BSc Honours Anthropology, 3rd year.
dignitaries, parents, and the stars of the day, our students. As convener of this program, it is my honor to extend a heartfelt vote of thanks on the occasion of the 78th prize distribution ceremony of Hansraj College. We are deeply thankful to our chief guest, Professor Pratik Sharma, Vice Chancellor DTU, for sharing words of his wisdom as well as his experiences as he was growing up. I'm sure they mean a lot to the students gathered here today. And our guest of honor, Srimati Shankar Jha, alumnus HRC, for again sharing what he thinks are the biggest lessons that he learned while he was growing up in college. I also express my heartfelt thanks and gratitude to Professor Rama, our principal, for always strengthening us, for providing us the means to continue on our march towards excellence. I thank my colleagues, my committee who have worked quite hard to make this program a success. All the teaching staff who have burnt the midnight oil, I think, along with the students to bring out their excellence, and the non-teaching staff for supporting them. So once again, I extend a very, very, very heartfelt gratitude to all of you. I request you all to stand up for the